Let's see this next example. We have a circular ring. This circular ring, its mass is m, its radius is r, and on the axis of this circular ring, at a distance of x from the center, there is a point mass m. This m is a point mass. This m is a ring mass. Question is, find out force of circular ring on the point mass. Write down the question. Find out gravitational force. Find out gravitational force of circular ring on a point mass placed on the axis of circular ring. Placed on the axis of circular ring. Up. Again, अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, then pause the video, go for it, come back. नहीं हुआ है, take the hint, again pause. कुछ भी नहीं हो पाए, पूरा का पूरा सोल्यूशन देखिए. अब पहली चीज हमने बोला this is m, force G m divided by this distance x whole square. ये आ गया फोर्स. कई लोग इस आंसर पर पहुंचते हैं. What is the separation between ring and this? Gmm upon x square. But this is wrong. Now, why this is wrong? Gravitational law in this form, G m1 m2 upon x square or upon separation square, is used when both masses are point masses. लेकिन हमारे क्वेश्चन में this m is a point mass, but this m is a ring mass, and therefore we cannot write down force in this form. इस क्रॉस के साथ उसका रीजन नोट कर लीजिए जरा. As ring is not a point mass, as ring is not a point mass, we cannot use Newton's law directly in this question. Directly. Indirectly कैसे करेंगे देखेंगे भी. At the same time, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर फोर्स शुड बी दिस Gmm अपॉन, उनका लॉजिक क्या रहता है, सर इस रिंग से इस m का डिस्टेंस x नहीं है, इस रिंग से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज रूट ओवर r square plus x square. And therefore they say that force is what? Gmm upon this distance, which is this, square of it. And they produce an answer like this. This is also wrong. Reason? Same reason. It's a ring mass, it's a point mass. ये जो फॉर्मेट है Gm1 m2 upon separation square, ये केवल कब वैलिड है? जब दोनों के दोनों मासेस किस तरह के हों? पॉइंट मास.
अब अगर ये पॉइंट मास नहीं है तब क्या करना चाहिए, वहां चलते हैं। ये जो रिंग है या कोई भी चीज अल्टीमेटली किससे बनी हुई है, पॉइंट्स। जिस रिंग को आप देख रहे हो, ये रिंग फंडामेंटली इस तरह से है। देयर आर सेवरल पॉइंट्स placed side by side, and this collection of points is capital N or the ring mass. इस रिंग के एक्सिस पर at distance x we have a point mass which is m. This is point mass which is m. Let's see this mass. What is this? It's a small point on this ring, and therefore this point we can say has a mass of dn. What is d? Something which is very small. तो हमने इस पूरी रिंग पर एक छोटा सा पॉइंट कट किया। जो छोटा सा पॉइंट था, उस छोटे से पॉइंट का मास क्या है, dn. नाउ मैंने क्या बोला, व्हाट इज dn? dn इज अ पॉइंट मास. व्हाट इज m? m इज अ रिंग मास. लेकिन इस रिंग मास पर छोटा सा ये dn क्या बना हुआ है, पॉइंट मास. What is m? This m is already a point mass. अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो आपको पता है that this dm is going to pull this m towards itself with what force? df. Why df? Small mass and therefore small force. What is this df? df is g times dm multiplied by m divided by separation between this point and m. रिंग पर जो भी पॉइंट्स होंगे उनका इस जगह से जो डिस्टेंस आएगा that will be what? root over r square plus x square, and therefore square of this gets you r square plus x square. Nothing is wrong, everything is correct. Why everything is correct? कब ये फॉर्मेट यूज होता है, जब दोनों मासेस किस तरह के हों, पॉइंट मासेस. वही हो रहा है. dm is a point mass, small m is also a point mass, and therefore I can use it. अब मुझे फाइंड करना है f. अगर f फाइंड करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ df. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ df? जितने भी पॉइंट मास इस रिंग पर हैं उन सब का फोर्स निकालकर उसको ऐड करना, इंटीग्रेट करना. लेकिन एक प्रॉब्लम है, this presentation is also not correct. Why? Because force is a vector quantity. इस तरह का इंटीग्रेशन वेक्टर्स में केवल तब होता है जब सारे के सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे. फिर से सपोज आपको दिखता कि एक फोर्स लग रहा है 5 इधर, एक लग रहा है 4, एक लग रहा है 3. तब आप क्या करते, टोटल 5 + 4 + 3. डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज अलाउड. क्यों? Because all the forces are pointing in the same direction. But suppose I say that a force is acting in this direction, a force is acting in this direction. Let's say there are two forces. One is 3 and the other one is 4. If this is 3 and this is 4 and angle is what, 90, then do you say that resultant is 3 + 4 7? No. What is the resultant if angle is 90?
रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच मीन्स टोटल फोर्स निकालते वक्त आप इस तरह का इंटीग्रेशन केवल कब यूज कर सकते हैं, व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या इस सेटअप में भी ऐसा हो रहा है? नहीं। लेट्स लुक एट दिस डीएम। अगर आदमी इस डीएम की बात करता तो ये डीएम इस एम को अपनी तरफ खींच रहा होता विद व्हाट फोर्स? डीएफ। इनफैक्ट जितने भी इस रिंग पर पॉइंट मासेस हैं, दे ऑल आर पुलिंग ऑन दिस एम like this, and if you can visualize these forces, they are basically forming a cone type of thing. Look here, अगर मैं इस रिंग को इस तरह से डिफाइन करूं, looking from this side, this is your ring and these are several point masses on the ring. And the small m, this small m is on the axis. Where is the axis? That's the axis. यहां पर जो m होगा, इस m को ये अलग अलग पॉइंट मासेस किस तरह से फोर्स लगाएंगे? this. I hope you can see a cone being formed. A cone being formed, which means all these df's are not in the same direction, and therefore we cannot use integration in this form. Write down this as a statement. Statement behind this thing being wrong. Direct integration of vectors is allowed only if they all are pointing in the same direction. Direct integration of vectors is allowed only if they all are pointing in the same direction. But in our question, all the df's are pointing in different directions. All the df's are pointing in different directions, and therefore we cannot use direct integration like this. We cannot use direct integration like this. आपने बोला कि यार डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते तो क्या करें? तो जब वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं तो आपको पता है क्या करना चाहिए. We always resolve them. And how do you resolve them? Let's say this angle is what? Theta. If you look at the setup is very much symmetrical, and therefore this angle is also what? Theta. Now ये जो df है, let me draw these two df's right here. This df and this df. Let's talk about forces of two diametrically opposite point masses. Diametrically opposite point masses. Now डायमेट्रिकली ऑपोजिट से क्या फायदा होगा अभी दिखेगा. दिस इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. ये जो डीएफ है इसका एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा. दिस कंपोनेंट इज व्हाट? डीएफ cos थीटा, एंड कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन इज व्हाट? डीएफ sin थीटा. Similarly, ये जो df है, इस df का भी इस तरफ का कंपोनेंट क्या बनकर आएगा? df cos theta, and this component will be df sin theta. df जिधर थीटा होता है उस तरफ का कंपोनेंट cos,
Perpendicular component is what? Sine. Cos. Perpendicular component is what? Sine. Now, I hope you can see that this df sine theta is going to cancel this df sine theta. Kyun? Because these two dm's, they are diametrically opposite. Diametrically opposite means, yahan dekhna. If someone takes this dm and just diametrically opposite dm, then force of this dm on a point mass which is placed on the axis right here, will be in this direction. Similarly, force of this dm will be in this direction. Now let me show this setup in this form. यहां पर ये हो रहा है, ये दिखा आपको, ये जो df है इसका df साइन कंपोनेंट, ये जो df है इसका df साइन कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल. df साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल. इसका मतलब which component will survive df cos, which means what? If you need f, then you thought that f is integration of df, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पूरा का पूरा df हमारे काम का नहीं था. इस df का df cos सरवाइव करता है df sin डायमेट्रिकली ऑपोजिट dm के df sin से क्या हो जाता है? कैंसिल. Which means instead of integrating df, you must integrate what? df cos theta. फिर से, जितने भी पॉइंट मासेस हैं इस रिंग पर, जितने भी, उन सब का एक कंपोनेंट कहां आएगा? along the axis. That will be what? df cos. दूसरा कंपोनेंट हमेशा कहां आएगा? perpendicular to the axis. Perpendicular to the axis components डायरेक्टली ऑपोजिट dm के फोर्सेस से क्या हो जाएंगे? कैंसिल. कौन से कंपोनेंट सरवाइव करेंगे? only along the axis components, and therefore total force is what? Integration of df cos theta. यहां पहुंचकर you can write a statement so that you remember this thing. df sin theta component of every dm gets cancelled by the df sin theta component of diametrically opposite dm, and therefore each and every point mass on the ring is effectively transferring df cos theta. Now, what is this df cos theta? इसको देखते हैं आप. What's the value of df? The g m dm divided by r square plus x square. R square plus x square multiplied by cos theta. What is cos theta? If I join this line, this angle is what? Theta. This length is what? Root over r square plus x square. Look at this right angle triangle. In this right angle triangle, what's the value of cos theta? Base x upon hypotenuse is what? Root over
r square plus x square. That's value of cos theta. I put this value of cos theta in here. It becomes x upon root over r square plus x square. यहाँ पहुंचकर वीडियो पॉज करना और इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करना. नहीं हो पाए, come back and see the solution. Now, जब लोग इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उस x के टर्म को देखकर डर जाते हैं कि यार x किस तरह से ये इंटीग्रेट होगा. लेकिन मजे की चीज ये है कि इस रिंग पर आप कहीं भी चले जाओ, ये x क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है. ये जितने भी पॉइंट मासेस थे इन सब के लिए स्मॉल n का डिस्टेंस सेंटर से कितना बना हुआ था, x. ये जितने भी पॉइंट मासेस थे इन सब के लिए ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x. Which means this x is a constant. R is the radius, is already a constant. इंटीग्रेशन में जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उनको हम बाहर निकालते हैं. g m x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. g m x r square plus x square to the power 1, r square plus x square to the power half, together 3/2. What is left inside integration of dm? What do you mean by integration of dm? ये जितने भी dm हैं इन सब के मासेस को क्या कर दो, ऐड. अगर आप रिंग पर जितने भी पॉइंट मासेस हैं उन सब के पॉइंट मासेस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल M. What is capital M? Total mass of the ring. What is integration of dm? Integration of dm is capital M, and that gives us the answer gm m x whole divided by r square plus x square to the power 3/2. That's the answer. ये नहीं है, ये भी नहीं है. इसकी जगह करेक्ट आंसर क्या आया, gmmx upon r square plus x square to the power 3/2. And what about direction? डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, df cos. इसका मतलब नेट फोर्स कहां आ रहा है, along the axis towards the center of the circular ring. Write down the directional part. Direction of force is along the axis and towards the center of the ring. Towards the center of the ring. होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए था. क्या क्या नहीं कर सकते ये पता होना जरूरी है. इसमें कुछ लोगों को क्या और कंफ्यूजन रहता है, वो बोलते हैं कि सर df cos आपने यहाँ 2df cos क्यों नहीं किया. मैंने क्या लॉजिक बोला, मैंने बोला जितने भी dm है पॉइंट मासेस, दे आर गिविंग अस व्हाट, df cos एंड df sin. उसमें से सबके df sin क्या हो रहे हैं, कैंसिल. इसका मतलब जितने भी dm हैं सबके df cos को कलेक्ट कर लो. सबको जब कलेक्ट करोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा. इसलिए you don't have to write 2df. Simply saying that सबके सब df cos कलेक्ट करके ऐड कर दो, and therefore you can directly use this part. तो यहां पर थोड़ा सा मैथ्स में, जो मैथ्स वाले उन्होंने लिमिट्स एंड ऑल करके सुना होगा, किस तरह से आप इन रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो.
कि ये पूरा फॉर्मेट सही है या नहीं। हमने बोला कि यार ये जो फॉर्मूला है ये केवल कब एप्लीकेबल है, व्हेन कैपिटल M and small m they both are what ring, they both are what point masses. Now if I ask you what should you do or what should be done so that this ring mass becomes a point mass, क्या करें कि ये रिंग मास पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने बोला एक काम करते हैं, इफ R टेंड्स टू 0, फिजिक्स में बोलने का तरीका ये है R टेंड्स टू 0, मतलब जितना स्मॉल हो सकता है R उतना। अगर ये R ऑलमोस्ट 0 हो जाए, टेंड्स टू or if tends to 0, then I hope you can see this capital M will also behave as a point mass. R को आपने क्या कर दिया 0, और अगर ये R खत्म हो गया तो फिर ये पूरी की पूरी रिंग is just like this. That's your capital M. क्या बन चुका है पॉइंट, उससे x डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है स्मॉल m, and therefore force of M on small m must be G m upon x square. पॉइंट बन चुका है। कब? अगर R क्या हो जाए 0। हमने बोला ठीक है, यहां आते हैं। अगर R is almost 0, if R is almost 0 और R tends to 0, तो पहली चीज तो उसका स्क्वायर ऑल भी क्या हो जाएगा 0। सिंपल मैथ्स, 0.1 स्मॉल है, उसका स्क्वायर 0.01 और भी स्मॉल हो गया। तो ये जो R स्क्वायर है, दिस टर्म इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू व्हाट x. If R square is negligible as compared to x, then what we can do is we can say that this force is G m x upon, look here, R is gone. If R is gone, you are left with what? X square to the power 3 by 2. This is gone. X square to the power 3 by 2. What is that? X cube. Square, power, root cancel, and you get what? X cube. This is here, which is G m upon x and x cube, x square. इसका मतलब हमारा रिजल्ट इस केस को भी जस्टिफाई कर रहा है। That's how you can use this concept of limits, which is coming from maths, in a question like this. जो बायो वाले हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है। R tends to 0, R खत्म हो गया। If R is gone, this is gone. If this is gone, you're left with what? X squared to the power 3 by 2. What is that? X square to the power 3 by 2. What is this? X cube. That's what we are doing. Nothing special. तो मैथ्स की लिमिट्स एंड ऑल से बायो वालों को डरने की जरूरत नहीं है। हमने बोला है कि R की वैल्यू 0 कर दो, कितना फोर्स आएगा, इतना आएगा। ये आना क्या चाहिए था, ये आना चाहिए था, वही आ भी रहा है।
ये क्यों आना चाहिए था? क्योंकि जब आप r को 0 कर रहे हैं तो आप रिंग को क्या बना दे रहे हो? एक पॉइंट मास। नोट डाउन एवरीथिंग।